हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक मिनट, मैं इंस्टा लाइव भी जा रही हूँ, जूम पे भी हूँ. सो लेट्स सी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, टू डू बोथ the apps at the same time. I know I just saw one question on YouTube, so I'm going to try to reply that. It will be very interesting for you all to know. तुमने दूसरा फोन कहाँ रखा मैंने? हाँ, उसमें मैंने हाय और मैं आज ना ये हेलो, हैव आर यू, वेव, ये सब नहीं होगा. क्योंकि क्या होता है जब मैं ऐसा करती हूँ, पूरा चैट गड़बड़ हो जाता है, मैं उसमें लग जाती हूँ एंड इट इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, यस, आई सॉ द हाइज. आई ट्राई टू मैक्स रिप्लाई टू द हाइज बट नॉट टू द वेव्स, सो प्लीज डोंट माइंड. एंड यूट्यूब पे जो भी देख रहा है, हम इंस्टा और यूट्यूब और जूम साथ में कर रहे हैं. किसी को मुझसे बात करनी है तो जूम पे आ जाओ, मीन्स वॉइस. इफ नॉट, यू कैन जस्ट चैट एंड पुट योर आप कौन हो, कैन आई नो यू. अच्छा, इफ यू डोंट नो मी, गो लुक अप. Right now we are not going to I'm not going to waste too much time introducing myself, because this is hi Ayush, hi Smile, hi everyone, and I'm going to try to do YouTube together. So YouTube का question ये है. ओके, किसी ने लिखा है, विवेक उधर लिखा है, विवेक पांडे ने लिखा है. थैंक यू चैत्रा. ओके, सो आज का ए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ टू, आई एम इन लव विद माय बेस्ट फ्रेंड, शुड आई गो अहेड एंड प्रपोज टू हर? I fear of losing my friendship if this goes wrong. Okay, how to tell your best friend if I have something for you, if I have something for you, nahi, feeling emotions, something like love. Okay, अभी you will be very fascinated to know कि क्या हुआ है. एक तो मुझे disable करने दो waiting room, नहीं तो मैं इसी में लग जाऊंगी. Okay, so what has happened lately? I have had people. एक मिनट, let me put myself on. क्या spotlight कहाँ चला गया यार? Shouldn't I be able to spotlight myself? Okay, I'll just pin my chat for now. Okay, and so I want to, hi Rohit, hi Nashikar, Raj. Wait यार, let me spotlight myself. हाँ, spotlight, because क्या होता है फिर तुम लोग के नाम नजर आते हैं. Okay, I hope no questions I missed on Insta. अगर से Insta पे क्वेश्चन होगा, तुम लोग को पता है वहां पे एक लिखा होता है क्वेश्चन, ठीक है? And just post your question there, because YouTube is so streamlined that way you can see the questions. So this answer is very risky basically if you propose to one of your best friends. क्योंकि अभी recently आज किसी के साथ ऐसा हुआ है. तो क्या था कि he was in a relationship and he got out of the relationship. He used to have a very good girl friend who was a girl, and he proposed to her, as in said I love you. So he was not very sure, but he had heard from her friend कि she doesn't want to be in a relationship, but इसको इतनी मस्ती थी कि उसने बोल दिया. अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उन दोनों के बीच में awkwardness आ गई, क्योंकि वो लड़की was not एक मिनट, what's the purpose of life? I'll remember that question. So let me, is it possible to pause this Insta? So the answer to this question is, if you're ready to hear a no, if you're ready to deal with the discomfort after that. And मैंने इस इंसान को भी यही पूछा था, क्या उस लड़की ने आपको किसी भी तरह की साइन दी थी कि she is into you or she likes you or something of that sort? So वो भी नहीं था. जिनको साइंस नहीं पता, सब तो नहीं बोल सकती, बट मेरा एक वीडियो है रिलेटेड टू दैट. प्लीज डू नॉट टेल समवन दैट यू लव देम if they are not really into you, if they are not waiting for you, or if they are committed elsewhere. तुमको समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है. ऑल्दो मैंने इस बात पे वीडियो बनाई है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना if someone is into us or not. And if you're ready to take the no, if you're ready to accept that there will be awkwardness, the friendship might just be called off by the girl. I'll tell you why. Because इस इंसान को जब तुम लोग प्रपोज करते हो, क्या होता है कि तुम सिर्फ अपना देख रहे हो. तो तुम ये सोचते हो कि this is my feelings, this is how I feel, so I should be saying I love you or I feel that way. but जरूरी नहीं कि सामने वाला आपको उस नजरिए से देख रहा है. तो क्या होता है करके आप एक बार प्रपोज करते हो, फिर वो इंसान सोचने लग जाता है, यार इतना अनकंफर्टेबल है. स्पेशली तुम्हारी उम्र में, मतलब जो यंग लोग होते हैं, उन लोगों के उम्र में क्या होता है, यू कांट प्रोसेस सच so many feelings, so many attachments and so many emotions. So
you kind of drift away and you're taking time. So this person who I'm talking about, the girl said, give me time, give me space, just don't cling to me and all that. So please do not cling to anyone if they say no. And अगर से दिल टूट गया तो हार्ट ब्रेक वाला सेशन तो मेरा है ही. सो सोच समझ के प्रपोज करो और बोलना. और वैसे भी आप लोगों के एज में अब क्या होता है कि chances of it not working out is a lot, like more than working out, it doesn't work out. Kabhi na kabhi, you might have a fallout, you might break up, so be ready for it. See, agar se hum insan itna nahi darte na with someone saying no, with us feeling discomfort, with us feeling sad or unhappy after something happens, we perhaps might be more like out there and put our hearts on the line. But हम इंसान हैं, हम डेलिकेट होते हैं, हम सेंसिटिव होते हैं, हमको ये सब ऑकवर्डनेस से तकलीफ होती है. तो थोड़ा स्ट्रांग होके जाना अगर से, और मुझे बताना फिर हाउ डिड इट गो. बट डू थिंक अबाउट इट. आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस द फ्रेंडशिप? बिकॉज आफ्टर दैट अगर से रिलेशनशिप हुआ तो ठीक है, बट रिलेशनशिप होने के बाद इफ इट डजंट वर्क आउट, which most probably, because friendships and relationships are very different, okay, then what are you going to do? Suppose you propose and the girl says no, what is it going to be? Maybe you're ready for it. What if, are you ready for her reaction? What if she is uncomfortable being around you? Then what are you going to do? How are you going to work on it? So सोचने वाली बात है. ठीक है. ओ सॉरी, हाय हाय. अच्छा, तुम लोग को मालूम है ना मेरा वो क्या होता है गौरव, वो क्या है जहाँ पे हम लोग पैसा पे करके चैट पे क्वेश्चंस लेते हैं, क्या सुपर चैट, वो अवेलेबल है. इन केस आई मिस, अभी अचानक मैंने रियलाइज नहीं किया, ये 2 जगह करते करते कुछ ज्यादा हाई. नहीं, दुबई आई एम लिविंग ऑन 8 गुरकीरट एंड yikes, oh you passed your exams with 8 CGPA. Thanks so much. I'm so happy for you and thank you for at least respecting and updating me and appreciating the efforts that I put for you. So God bless you and ऐसे ही अच्छा करते रहो. कभी लाइफ में कभी कोई मुसीबत हो तो डू कॉन्टेक्ट मी. ठीक है मैम. डोंट वांट टू गो थ्रू दैट. इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू द awkwardness, Vivek, don't propose, don't go there, because it's, if you don't see any of the signs, it's not. And she is not into me, probably 70% she is not into this guy. So please don't propose. I would not. What's the title of the video? Which title of which video? I don't know what you're saying. Which video are you talking about? I've seen that video. Yikes, it's written heartbreak. 2 घंटे का psychoeducational session है. It teaches you about what you're experiencing and how to overcome heartbreaks. अच्छा, अब YouTube, I am going to look at the Insta chat. Good evening, Mrinoy and Auntie. What's the purpose of life? What's the purpose of life? Each one's purpose is different. There is no one set purpose of life. क्योंकि अगर से तुम सदगुरु को बोलोगे तो उनका पर्पस अलग है, मुझे पूछोगे तो मेरा पर्पस अलग है, अपने पेरेंट्स से बात करोगे उनका पर्पस अलग होगा. There is no set purpose any one of us. But I would like to believe that as a human race, as the same species, at least हम लोगों का purpose ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को hurt ना करें, that we use our life well and we are kind and we leave some kind of legacy that our life was used for a good purpose. यानी किसी की मदद करना, इतनी सी या बहुत ज़्यादा, जो भी तुम्हारे मन में आए वो करना. And if we have this common goal as human beings to be there for each other, to care about each other, that would be such a wonderful thing, right? कि हमको पता है कि हम इस दुनिया में आ रहे हैं, so एक चीज के लिए आ रहे हैं, not just for selfish. एक मिनट यार, ये फैन मेरे बाल मेरे, हाँ. So not just for a selfish purpose कि हम सिर्फ अपना काम देखेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फैमिली देखेंगे, but what are we leaving behind? What are we going to do for this planet? So if you can do that and leave some good legacy behind besides taking care of yourself, why not? I would say that's the purpose of life. Hi Sachin Bhatti. Dekho, I've never forgotten your surname after that day. Hi BAI 360. Hi Weber. अरे दुबई में नहीं हूँ मैं, 8 को जा रही हूँ. मैं ठीक हूँ तरुण. I hope you're well. Sachin, I'm good. I hope you're good too. मुझे यहाँ कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है. हाँ, एक्चुअली आई हैव टू मैम, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ अब पहले जैसा नहीं रहा, बट वी लव ईच अदर सो मच. क्या कर रहे हैं, क्या करूं?
but you still love each other, right? मतलब if you're not पहले जैसे नहीं रहा, I'll tell you what happens. So when we get into any relationship, आप देखो जब आप कोई एक गेम भी खेलते हो, आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, आप अगर से कोई नया लैंग्वेज सीखते हो, आप कुछ भी लाइफ में करते हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, राइट? आप इनिशियली देयर विल बी दिस रियल हाई, जैसे जिम भी जाते हैं हम, इनिशियली हमको बहुत एनर्जी होती है, हमको सब कुछ करना होता है, बट उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम वी वांट टू लाइक फेड अप, वी माइट नॉट लाइक अ पर्टिकुलर थिंग. बट रिलेशनशिप्स में ऐसा कोई इंसान नहीं, आई मीन बहुत कम रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे ये वाला फेज नहीं आता, जहाँ पे वी स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड और वी लूज द सो कॉल्ड पैशन. So then you have to work on it. There is no other way. अगर से आप लोग अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, that's a very good thing. But it a relationship cannot be sustained. जैसे अगर से आपके सिक्स पैक एब्स है और आप चाहते हो उसको बनाए रखें, क्या is it possible कि आप कंटिन्यू नहीं करोगे जिम तो वो रहेगा क्या? नहीं ना. वैसे ही रिलेशनशिप को फ्रेश रखने में, रिलेशनशिप को अलाइव रखने में आपको भी उसमें ऑक्सीजन पंप करना पड़ता है. डेट्स पे जाओ, एक दूसरे के लिए अच्छी चीजें करो, लव नोट्स छोड़ो, मेक टाइम फॉर ईच अदर टू सेंड शॉर्ट टेक्स्ट, make sure you talk to each other, go for movies, go for picnics, go, there's so much you can do actually. And nahi samajh mein aaye, google pe karo, bahut बथेरे ideas hai to basically find out how to restart a relationship which has lost its passion, which has become little thoda sa ठंडा हो जाता है. उसमें वो आग कैसे, the passion, the fire, how to light it, वो आप देख सकते हो. ठीक है. I am in a relationship with my bestie from 4 years, still tense, still. अच्छा हाँ, हमको थोड़े सालों में मेरे को बताना तुम लोग की शादी हुई कि नहीं, बिकॉज मैं एक ये कर रही हूँ पोल ऑफ सॉर्ट्स कि कितने लोगों की लास्ट करती है हु स्टार्ट इन स्कूल. ओके, कहाँ थे हम लोग? बापरे, एक मिनट, यूट्यूब कम्युनिटी रुको, मैं इंस्टा का. I like a girl, we are not close friends, she's not at my place but she wants to be successful first then come to my relation, should I wait? Was not close friend, she's not at my place, matlab long distance, I'm guessing that's what it means. And but she wants to be successful then come into. So zaruri nahi kariye, she said come into the relationship, zaruri nahi karke tumhare sath relationship ho, kyunki by the time we all, do you know, every year intellectually, emotionally we grow, we change, we evolve. How do you know that by the time she reaches there that she is going to come back to you? Not necessary, she might click with somebody else, then what are you going to do? So zaruri nahi hai. Is there any guarantee? जब मुझे क्या पूछ रहे हो, उसको पूछो क्या गारंटी है वो आएगी. अगर से गारंटी नहीं दे रही तो आंसर तो बड़ा क्लियर है, आपको वेट करना है तो करो, नहीं तो मत वेट करो, आगे बढ़ो. क्योंकि what are the chances? I'm good, serious, something, I'm good, I hope you're fine. अच्छा, now I'm switching to here. Okay, मैंने तुम लोग को बोला है अगर से किसी को मुझसे क्वेश्चंस पूछना है, अगर से मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो प्लीज कम सुपर चैट कर देना, but I'm trying my level best. Just be a little patient, I'll reply to everything. It's not about super chat, but I'm just saying in case anybody is in a rush. Okay, hi Divyanshu, hi. अरे स्टडी से आंटी हुई ना उनकी, मैं उनके मॉम डैड के बराबर हूँ, तो इट्स फाइन. आई एम, हाय गौरव, हाउ आर यू? आई एम वेल. बालाजी, हेलो. उत्कर्ष, हेलो, गुड टू सी ऑल. एंड जैसे आप छोड़ के गए थे वैसे. ओके, गुड मैम. आई यूज्ड टू लव अ गर्ल इन द स्कूल. तुम लोग सबके लिए मैं वापस से प्रोग्रेस स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड डिडंट एक्सप्रेस्ड माय फीलिंग्स, इट्स बीन 3-4 years, स्टिल आई गेट अ मैम एंड स्टिल कांट गेट ओवर. हाँ, कभी कभी जो हम लोग नहीं करते और हमको वो हमारे दिमाग में इतना घर कर बैठता है, शायद तुम बोलते तो हाँ बोलती, नहीं बोलते तो, और बोलते तो ना भी बोलती. ये वाला बहुत इकी होता है, तो अपने आप को बिजी रखो. और अगर से अभी भी तकलीफ हो रही है कि क्यों नहीं बोला, गो एंड टेल हर इफ यू फील लाइक. एंड आई डोंट नो वेयर इज दैट गर्ल इज स्टिल अराउंड और नॉट. इफ यू फील लाइक, या. By the way, how to move on from someone, there is a full psychoeducational group on how to move on my channel. I think, what is it called, I forgot. Anyway, playlist mein hai overthinking, self worth and heartbreak session.
specifically for all of you all, please go through it. These are the fundamentals of life that you should go through. Yeah. And Ishan 253, this answer was for you. And now I'm moving to Insta. Okay. Should I stay friends with the girl who rejected me? Okay. तो अगर से तुमने मेरा सेशन नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से, जो लोग नए हैं and who don't know about what I say, देखो, आपको पता है आपका पर्सनालिटी क्या है. कुछ लोग हैं जो फ्रेंडशिप रखते हैं और बोलते हैं इट्स फाइन यार, सो व्हाट, बिग शिट, इट डजंट मैटर, आई एम फाइन. बट सम पीपल जस्ट कांट डील विद दैट हर्ट, because every time that person meets you or looks at you or you cross paths or whatever you talk, it kind of reminds you, right, that you're interested in this person and this person said no. So you need to ask yourself, can you deal with staying friends? You don't owe them anything. You don't have to do things which make you unhappy. जैसे मेरे वाले सेशन में मैंने बोला था, सपोज एक ये वाली टेबल है, ठीक है, ये मुझे उस तरफ जाना है, मुझे मालूम है करके ये टेबल से मैं टकरा के उस तरफ नहीं जा सकती, राइट, मुझे इस तरफ से जाना है, पर मैं पर्पसली इसको हटाती भी नहीं हूँ और देखती भी नहीं हूँ, जानबूझ कर उसमें टकराते जाती हूँ. उसका मतलब क्या? So same way, you keep this girl in front of in your life. If you're going to keep bumping into her and it is bothering you, move her aside or you move aside. Since you can't move the person aside, you will have to make sure कि तुम जैसे गैस का फ्लेम आप ऑन रखो या छोटे पे रखो, मीडियम पे रखो या हाई पे रखो, चॉइस आपकी होगी. तकलीफ तो आपको होगी अगर से आप हाथ उसके ऊपर रखोगे और फिर बोलोगे हाय चटके लग रहे हैं, हाय जल रहा है. तुम्हारा चॉइस है उस नॉब को बंद कर, राइट? सो दिस इज दैट नॉब, इट्स इन योर हैंड्स. Do you want to go through this or not is your choice. And if it doesn't bother you, and rejected, actually तुम लोग, जिन लोगों को नहीं पता या जिनको पता है, तुमको पता है कि मैं ये वर्ड रिजेक्टेड में मुझे बहुत गुस्सा आता है. तुम बॉयज या गर्ल्स किसी भी तरह से अपने आप को बोलते हो कि यू आर रिजेक्टेड इन एनी सॉर्ट ऑफ वे. यू आर नॉट सम कचरा टू बी रिजेक्टेड. यू आर नॉट अ क्लियरेंस सेल का माल. प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, जॉब से आपको रिजेक्शन मिल गई, आपको कहीं और से, बट डू नॉट, व्हेन अ गर्ल सेज नो, से शी डिक्लाइंड, शी सेड नो. रिजेक्टेड इतना नेगेटिव टर्म है, तुम लोग के फिर ब्रेन में वो इफेक्ट करता है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब उसको तुमने इतना पावर दिया कि वो तुमको अपने जिंदगी से उसने फेंक दिया. यार ऐसा वर्ड्स मत यूज किया करो. से शी नो सेड नो टू बी बिग डील यार. शी हैज अ चॉइस. आपको भी कोई, मैं अगर से 10 लड़कियां, आपको कुछ लोग हाँ भी बोल देंगे उस 10 लड़कियों के लिए, बट लेट्स से मैंने तुम्हारे सामने हजारों लड़कियां रख दी और उसमें से एक सिलेक्ट करना है, बाकी 999 रोने लगते हैं. आप बोलोगे करके यार तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी आर कंपैटिबल, दिस पर्सन एंड मी आर कंपैटिबल. इट्स जस्ट अबाउट कंपैटिबिलिटी. डोंट टेक इट टू so much too hard. And girls, be kind to the guys if they are proposing to you. Be nice, be gentle, okay? And okay, I hope I answered, Anuj, my pleasure that I helped you. What to do about passive aggressive? Is somebody with who is passive aggressive or are you passive aggressive? See, जब भी कोई इंसान passive aggressive होता है, मतलब उनको कुछ bother कर रहा होता है, तो वो उसका तरीका होता है उसको एक्सप्रेस करने का. क्या सही तरीका है? ऑब्वियसली नॉट. तो बट डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज. सामने वाला है तो उसको जेंटली बताओ कि हे लिसन, तुम्हारे तानाज और ये अंडरलाइन जो तुम्हारा नेगेटिविटी और तुम्हारा जो एग्रेशन नजर आ रहा है, तुम सीधे होके तो नहीं बोल रहे हो, पर तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है. सिट डाउन एंड टॉक टू दैट पर्सन. और इफ यू फील डिफिकल्टी टू कन्फ्रंट, send a message to that person. And if you are doing it, then it's a very bad quality to have. स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है. और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं सामने वाले को, इसलिए हम लोग ताने में बात करते हैं. हम लोग ये सोचते हैं करके दिस पर्सन इज बी मीनिंग इन दिस वे, वो पर्सन बहुत रूड था, वो पर्सन मीन है, मे बी दैट पर्सन डजंट लाइक मी. सो मेनी अ टाइम्स वी रिएक्ट टू समवन्स वर्ड्स और एक्शंस in a more negative way than perhaps they have intended. Wow, 1 minute. I will reply to YouTube questions. I'm replying to Insta first. So I'm not very sure this is going very well. So this is like extra. Yahan bhi. So yeah, I think it's very important to be kind.
don't give tanas to people, talk politely to people. अगर से आपके पास choices होते हैं, pick and choose your battles instead of confronting. Like, I don't believe in constant aggression either, so be assertive, अपना boundaries draw करो और उस इंसान को बोलो, hey listen, I do not like this way you're behaving, or if it's you, then don't behave this way with someone. तुम लोग ऐसे questions लिखते हो ना, थोड़ा extra information देना, क्योंकि नहीं तो मैं इतने सारे hypothetical scenarios मन में बना के आप लोगों को मदद करने की कोशिश करती हूँ. So next time whoever's asking me for a question, asking me a question, please make sure कि थोड़ा सा extra information दो, ठीक है? Yes, I will. I'm looking at the question section on Insta. I'm unable to concentrate when someone talking to me continuously like half an hour and feel pressured. Okay. By the way, who's talking to you for half an hour? Me? Can you watch me for half an hour? So, देखो, कोई अगर से आपसे आधा घंटा बात कर, again, you're giving me very little to go on. I need to know exactly what scenario. Is it your boss? Is it your boyfriend? Is it your girlfriend? Is it your family member? In what context are you saying that you can't focus? And either which ways, if you cannot focus, suppose कोई इधर देख रहा है, थोड़ा देर पानी पीने जाओ, उठ के पानी पी के आओ, थोड़ा एक text ये करके get up and walk for a bit, and then come back and listen to that person. And half an hour, unless you're watching something on YouTube, you do have a choice to pause it and then go refresh yourself and come back. So, like I said, you're not giving me enough to go on. Okay, wow. YouTube का बहुत ज्यादा चैट बहुत लंबा है, 1 मिनट मुझे पढ़ने तो कहाँ थे हम लोग. ये क्या था? Oh, somebody again asked me on Prakhar and Shweta, Sandeep Maheshwari's. कितने बार बोला है, मुझे मत पूछो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है कोई भी कंट्रोवर्सी से. हम लोग, हमारे पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? Let's not go there. It's none of our business what they do, what they say. Mind your own business, okay? हाँ, आज relationship मैम, I used to do, okay, ये हो गया, how to move on हो गया. Okay, Ishant, my pleasure. How to deal with loneliness. This is Subramanyam Shetty. Okay, now are you actually alone in this world is very different from being lonely. So if you have family members, don't take them for granted. This is the question from YouTube, but I'm talking to both of, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है. तो पहले तो अपने लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है वो देखो. आपके पास फैमिली है, उसके लिए ग्रेटफुल बनो. एक भी दोस्त है, उसके लिए ग्रेटफुल बनो. नहीं है तो हमारे डिस्कॉर्ड पे आओ, दोस्ती करो. When you're lonely, you can learn a new language, learn a new skill, some musical instrument, learn to sing, go for a walk. इसी अंदर से जब हम आपने अभी रिसेंटली मैं वरुण का इंस्टा पे देख रही थी, उन्होंने एक रील डाला था कि जो इंसान अपने साथ अकेले नहीं बैठ सकता, ओके? एंड इवन आई बिलीव दैट यू शुड बी इफ यू हैव द एबिलिटी टू बी स्टिल, टू बी क्वाइट, टू बी गुड विथ योरसेल्फ अलोन. एंड वैसे तो तुम अलोन नहीं हो क्योंकि इतने सारे 7+ समथिंग बिलियन की पॉपुलेशन है, तो यू आर नॉट रियली अलोन. So see and look within, why are you feeling lonely? Is it because you're watching too much crap on Insta and you're seeing these, if you're single, and sometimes single people feel like that, if they're not in a relationship, they feel very pressurized कि हमको relationship में होना है, हमको what will people think? Oh, I'm so lonely. Everybody has a girlfriend or everybody has a boyfriend. I don't have anyone. So ये जो बातें हैं ना, ये आपको और नेगेटिव करेंगी. आप फोर्स नहीं कर सकते to go into a relationship till you get into one. Okay, till then learn to appreciate life, appreciate your health, appreciate the opportunity to study, appreciate that you have a family, you have food, you have shelter. That's the best way to deal with your own. And don't worry about that. कभी कभी डिस्कम्फर्ट सबको होता है, ठीक है? हम इंसानों की बहुत गंदी आदत है कि हमको सारा टाइम जल्दी जल्दी अच्छा फील करना है. वो नहीं करना है आपको. You have to learn to be okay and say to yourself that this is a phase, you will overcome it. रही बात आप, when you are dealing with this specific one, there is a video I made, how to be emotionally stable. Please go and watch that, use those. And also for your anxiety, when you're feeling loneliness,
There is a full psychoeducational session on overthinking and anxiety. Learn the tips and techniques how to overcome when you're going through this phase. It is very normal. Don't think something is wrong with you. And this is also going to be just a short phase and you will overcome it. But अगर से सारा टाइम उसी के बारे में अपने बारे में गंदी चीजें बोलोगे, मेरी लाइफ यूजलेस है, अगर से मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास मेरा जॉब ठीक नहीं चल रहा है, मेरा एग्जाम नहीं, see this is not going to solve the problem. If it would, I would tell all my clients, please आज से सिर्फ नेगेटिव बातें करो और कुछ नहीं. टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए हमको कि सारा टाइम वाओ लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स ब्यूटीफुल रेनबोज एंड सनशाइन. नो, लाइफ इज आल्सो नॉट लाइक दैट. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाए रखे इन द वे कि काम या पढ़ाई या जिम, मेडिटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जॉइन डिफरेंट ग्रुप्स लाइक फेसबुक बोलो, इंस्टा बोलो, कितने सारे ग्रुप्स हैं जहां पे आप अपना इंटेलेक्चुअली आप इतने स्टिमुलेट हो सकते हो. सो फाइंड वेज टू कोप विद इट एंड also learn to be okay with yourself being alone. There is nothing wrong with being like this, okay? And dheere dheere, once you learn how to like watch the videos which I've given, now I cannot go into detail कि कौन सा टेक्निक कहाँ यूज करना है, वो सब एक्सप्लेन किया गया है. गो एंड वॉच द साइकोएजुकेशनल सेशन, ठीक है? ऐसे ओपन द चैट. मस्त रोस्ट मारा. किसने किसको रोस्ट मारा यार, मुझे तो पता ही नहीं. बट एनीवे, मैम योर व्यू. अच्छा, कितने बार अल्फा मैंने ऑलरेडी बोल दिया बाबा. प्लीज डोंट राइट अबाउट दिस. आई रियली डोंट केयर अबाउट द कंट्रोवर्सी. आई गॉट हाय सुजल, गुड टू सी यू हियर. Okay, Ashu. I'm good. Ashu, how are you? Okay. I still get dreams of being in an exam hall unprepared for. Is this some? No, it's not a trauma. Yeah, क्योंकि वो time पे just like this guy who had this girlfriend thing where he didn't propose and he kept that in his mind. I'm sure that fright inside you, हम सबको होता था. For me also, many years after I gave my exams, I used to still feel like that. Even though I was prepared, I used to still feel like that. वो इतना ट्रॉमा डालते ना हमारे टीचर्स एंड हमारा एग्जाम का इतना प्रेशर होता है. सो कभी कभी हमारा ब्रेन जो चीजें प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करता, या दिन में तुमने कुछ देखा होता है रिलेटेड टू द एग्जाम ऑन अ टीवी शो, मे बी समबडी अराउंड यू इज टॉकिंग अबाउट, मे बी यू फिनिश्ड योर एजुकेशन बट देयर मस्ट बी फैमिली मेंबर्स और अदर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स एंड यू आर रीडिंग सो मच नीट जेई. आजकल तो न्यूज़पेपर्स में भी इतना, तो वो तुमने डे टाइम में देखा है, एंड इट इज मैनिफेस्टिंग इन योर ड्रीम आल्सो, एंड इट रिमाइंड्स यू ऑफ द टाइम when you were in that stressful time of your life. It's not a big deal. Don't make unless you're like every single day you are having that, then I will tell you to go to a psychiatrist. If it's once in a while, it's okay, no big deal. हमको कितनी सारी चीजें आती हैं. कभी-कभी जैसे my dad passed away when I was 22, and fast forward to so many years later, I still dream of him because certain things which leave an indelible mark in our mind, we keep remembering it. Okay. Being a monk is better than being in a relationship. Well, each one to their own. जिनको monk बनना है monk बनो, जिनको relationship में जाना है relationship में जाओ. अच्छा, और कोई questions आए? Okay. क्या मेरे साथ मेरी क्या परछाई भी नहीं, but loneliness. Ma'am, could you please pin your Discord? It's on my Discord server. Link is in my bio. Okay. So please check link tree जहाँ है वहाँ पे, and just go and move. And by the way, जिनको नहीं पता, हमने स्टडी वीसीज भी स्टार्ट किए हैं. सब लोग साथ में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं. अभी सारे स्ट्रीम्स को हमने अलग अलग कर दिया. पहले एक ही स्टडी वीसी होती थी, अब हर चीज के लिए एक अलग वीसी है. So please go and sit and study together, okay? And very soon I think one more session on study techniques is being done by Ajay. So please follow Discord ka announcements. Okay, sorry. Smile, you didn't reply to my question. What was it specifically about? Okay, now Insta ka question. Ma'am, I don't want to be a parent because I don't want to deal with people. I was an extrovert, but after my friends betrayed me, now I just don't want a lot of people. I don't want to be parent. Am I getting this correct? Okay, you were betrayed by some people. Okay, what has that got to do with you being, unless you don't want this for your child and therefore you're thinking, यार, but what is the big deal? Even if you got betrayed, ऐसा नहीं कि किसी ने तुमको बेहोशी की मेडिसिन दे दी और तुम्हारे लिवर, किडनी, आईज सारे लेके गए.
तो मुझे समझ में आता है कि आपको किसी ने बिट्रे किया। बट अगर से तुम यहाँ टेक्स्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास डेटा है, घर है, क्या हुआ? वो इतना पावर क्यों दे रहे हो सामने वाले को कि तुमको थोड़ा सा दर्द देके गए तो थोड़ा उससे उभरो ना। किसके लाइफ में बिट्रेयल नहीं होता? किसको चीट नहीं करते लोग? किसको पैसे का या रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में, हर जगह। अरे यार, लोगों के बच्चे भी होते हैं, वो भी तो उनका ट्रस्ट बिट्रे करते हैं बड़े होके, फिर माँ बाप को पूछते नहीं है। कभी कभी माँ बाप बच्चों को ठीक से नहीं देखते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं। तो हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर इससे डरना क्या है यार? वाई शुड यू गिव देम? ओके, आई विल टेल यू माई लाइफ स्टोरी. ओके, many a times people betray my trust. Many a times people talk behind my back. And you know what? I have not given them that. Like some of my friends say ki, how come you're still nice to these people? I say, because if I change the core of who I am, if I change and become a bitter and a horrible human being, that means they won that battle, they won over me. That Rachna, who was such a nice human being, because of these betrayals and bitching and all that shit that is going on, I gave them that power. I put them on a pedestal and said कि hey, you're so powerful. तुमने तो मेरा पूरा दिल खराब कर दिया, मुझे एक बिटर इंसान बना दिया, मेरा पूरा कोर ऑफ गुडनेस निकाल दिया। क्योंकि तुम बुरे हो तो मैं तुम्हारा, I will follow suit and I'll become as bad as you. Why would I do that? Yaar, stay good to your core. Don't give the power to such crappy people to change who you are and change your concept. Agar se aapko nahi banna, don't blame them for not becoming a parent. You don't want to become a parent, I'm guessing that's what you meant. Then it should be because either you feel the responsibility of having a child is too much, maybe financially it is going to take a toll, maybe some people just don't want to have kids, which is also fine. And if that is the reason, it's fine, but don't let other people dictate what your life decisions are there. You take it based on what they have done to you. How ऐसा करेंगे तो कैसे जीतोगे ये बैटल? लाइफ में हमेशा हम ऊपर नीचे चलते रहते हैं, हमको दिल दुखेगा, पर इतना किसी को पावर मत दो कि तुमको पूरा तबाह करके चले जाए. That's not a good thing. So if you want to talk, I would like to know more, but please know everybody, I'm on break from next week till almost 15th of August. Yes, I have taken one appointment per day from next week, only one, because my packers are coming. I'm moving to Dubai. Then jab main jaungi, travel karungi and all that. So I will reply to the DMs, but I will be giving appointments. ये time थोड़े और pushed हो जाएंगे, तो please be patient with me and please wait. I will reply to your DM. और गौरव, मुझे याद दिला, मुझे 2 messages आए हैं, मुझे वो आज resolve करने हैं इस session में, because I cannot give a counseling appointment. My appointments are full. Just remind me to read it from Insta. I've marked them, but I've forgotten to. Zoom में भी chats. Podcast with Shweta. I don't know when. ओ सॉरी, मैंने तो यहाँ तो पढ़ा ही नहीं. ओ आई एम सो सॉरी Zoom people. मैम भी लाइक आज तो तूफान ही करते. आई स्वेयर. Talk about Shweta. No, why would I talk about him? No, let him be, and I hope his mom recovers fast. Why many guys fall in love for their best friend? Is there a real question? This is the real question I deserve observed everywhere. यार, क्योंकि you spend so much time with that person, you think you're clicking so well with, but लोगों को ये नहीं पता, जरूरी नहीं करके वो जो तुम्हारे friend है वो तुम्हारे साथ relationship में आ सकते हैं. Relationship dynamics और friendship dynamics बहुत अलग होते हैं. फ्रेंडशिप में इतना पॉजेसिवनेस नहीं होता जितना रिलेशनशिप में होता है, इतना गिव एंड टेक नहीं होता जितना एक रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है. लोग बहुत कंफ्यूज होके ये सोचते हैं, ओ जस्ट बिकॉज वी आर लाइक सच परफेक्ट गुड बडीज वी विल मेक वेरी गुड. I'm not saying that it doesn't happen. It can happen, but it is a little not as easy as people make it out to be. ठीक है? ओके, अभी हम कहाँ थे? एक मिनट, अभी इंस्टा का क्वेश्चन. ठीक है, प्राची, भगवान जाने प्राची कौन है. हाय इटाची, हाय कपिल, हाँ नीरज नहीं होती. आई वाज इन देयर. आई डोंट नो व्हाट. सी इफ यू पीपल राइट दिस ऐसी चीजें लिखोगे मुझे समझ में. मैम आई ऑलवेज अटेंड योर लाइव. ओ माय प्लेजर. मृन्मय, सॉरी.
Yes, I do remember your name, and I think I mispronounced it yet one more time. Ma'am, I used to love a girl in the school, but didn't express my feelings. It's been, अरे अभी तो तुम ना डेडी, तुम यहाँ भी हो और यूट्यूब पे भी हो, तो मैंने उधर रिप्लाई कर दिया था. अनिकेत, हाय मैम, आई लव अ गर्ल बट शी डोंट नो आई लव हर, शुड आई प्रपोज. अरे अभी तो मैंने रिप्लाई किया यूट्यूब पे, प्लीज रिवाइंड करके फिर से देखो, मैं कितने बार सेम क्वेश्चन को आंसर करूंगी. Or go and watch my video, signs if she's into me, and then multitasking. I swear I'm multitasking, and so many similar questions. Yeah, should I answer since there's similar questions? There is a ma'am. चलो कुछ different question आया. Ma'am, क्या क्या I do college dropout during, यार हिंदी में लिखा करो यार तुम लोग भी. Ma'am, I do college dropout during lockdown to save my parents money. Now I'm regretting now I can't apply for any job because I'm not. फिर से पढ़ो. Why have you stopped the home school? वो क्या बोलते हैं तुम लोग? होम स्कूलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो स्कूल में घर पे से करते हैं? It's never too late. Correspondence करो, पढ़ाई फिनिश करो. अगर से अभी पैसे हैं, get back to it. देखो, अगर से तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे हैं और तुमको काम करने की अभी जरूरत नहीं है, please remember, even I studied after my children were born. My brother also completed his education afterwards, after he started working. I know my other brother was studying and working at the same time. Please balance करो और अपने लाइफ को सुधारो. रिग्रेट्स में जीकर कुछ फायदा नहीं. तुमने वो डिसीजन लिया जो वो टाइम पे सही था, so that's why it makes it the right decision. It was not a wrong decision. But now fast forward, you have realized कि यार मैंने करना चाहिए था. कोई बात नहीं, लॉकडाउन में पैसे सबके इश्यूज चल रहे थे, हम सबके, मेरे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तो सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था. बट यू कैन गेट बैक on the horse again. Don't give up. Start, and you know I have posted resources on वो study वाला जो burnout वाला video है. There are so many things you can do if you have not studied enough. There are so many things you can do if you want to have a different career. आप कर सकते हो. Okay, don't give up so easily. Okay, ma'am. Whom do you support in Deva Parameshwara? Whom do I support in Shweta Prakhar and Sandeep Maheshwari controversy? What can we learn from controversies? So, from controversies, you can learn one thing, that it is none of your business. You don't need to talk about everything. You don't need to troll. You don't have to have cancel culture. You need to just mind your own damn business. अपने लाइफ में क्या कम प्रॉब्लम्स है कि तुम दूसरों के प्रॉब्लम में जम मारते, वो लोग मैनेज कर लेंगे. ये सीखना है कंट्रोवर्सी से. फालतू में अपना टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है? हैप्पी फ्रेंडशिप डे. अरे मुझे काहे नहीं विश कर रहा है हैप्पी फ्रेंडशिप डे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हो तो क्या होगा, मुझे भी विश कर सकते हो सबको. हाँ बोल दूंगा. ओके. हाउ टू डील विद एंटी सोशल डिसऑर्डर. ये बहुत ये इसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि आई नीड टू शुड नो फर्स्ट. पहले तो तुमने खुद को डायग्नोज किया कि किसी ने आपको डायग्नोज किया. अगर से किसी ने आपको डायग्नोज किया तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए था. मतलब ये सेल्फ डायग्नोसिस है. फॉर ऑल यू नो यू डोंट हैव अ डिसऑर्डर, ठीक है? सेकेंड ऑफ ऑल, व्हाई डू यू फील द वे यू फील? I need to know more. Is it to do with a childhood trauma? What is the reason? Is it genetics? Is there something which you need medication for? And if you need to be diagnosed, I am not a psychiatrist, I'm a counselor. So you write to me, I need to understand more. Then do you do paid session? No, I don't do paid session. Maybe next year I'll start taking payment for all my sessions. तुम लोग पे करोगे ना, जो लोग फ्री में सारा टाइम काउंसलिंग लेते रहते. तो no, I work for free. It's been since April 2020. I have not charged a single penny. And I don't know, maybe next year I will charge people who earn. क्योंकि आते हैं कुछ लोग जो earn करते हैं, सब सारे बच्चे नहीं होते. तो थोड़ा पैसा कमाऊंगी तो शायद. मुझे तो कुछ लोग बोलते हैं, मैम पता है इंडिया में 3-4 हजार रुपीज होते हैं पर आवर, एंड आप कुछ भी नहीं चार्ज करते. आई सेड हाँ, पैसे तो बना सकती हूँ वैसे, बट तुम जो छोटे बच्चे आते हो, छोटे मतलब छोटे तो नहीं हो, बेबीज तो नहीं हो, बट स्टिल मुझे बुरा लगता है. तो मे बी नेक्स्ट ईयर फॉर द वंस हु स्टार्ट अर्निंग. और जो भी मेरे से काउंसलिंग लेके गया है और तुम लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, रिलेशनशिप्स, यू हैव ओवरकम योर हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल दैट,
प्लीज एक काम करना कि चैनल को कभी कभी सुपर चैट में पैसे डाल देना, टीम को दे देंगे. एंड आई होप वन डे आई कैन हैव लाइक अ प्रॉपर system where people can come who can take counseling for free, but people who can pay as much as they want, how much ever they can afford, because ये YouTube channel चलाना easy नहीं है. I tell you, to get people to help with thumbnails for video editing, I'm lucky कि अभी है लोग, but जो भी देख रहा है, अगर से आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, come and help me because I don't make money, so I can't pay anybody, and I'm बच्चे लोग बिजी हो जाते हैं, तो इसलिए वीडियोस फिर इतने नहीं आते, क्योंकि मैं कितना काम कर सकती हूँ, मैं काउंसलिंग भी करूँ, यूट्यूब चैनल भी चलाना है, ओह इतना काम हो जाता है. बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन. सो hi Mohit, if you can see, I did. Okay, wait, I'm seeing your question. Smile. Sometimes when someone like my dad talk to me on topic continuously, I feel pressure. Okay. फिर वो तो बहुत नेचुरल है यार. कोई भी पेरेंट आपके सामने बैठा हो और अगर से आपकी नजरें नीचे ऊपर ऐसे नहीं गए, इट इज सो नॉर्मल, because he's trying to tell you things, you're like, yaar, please, not one more time. It's a very natural thing to happen. मेरे बच्चे तो 4 सेंटेंसेस में ही ऐसा बिहेव करते कि मेरी बात नहीं सुन सकते. कि आजकल की जनरेशन को, हमारे टाइम पे क्या था कि हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे, मजाल है हमारी कि हम नीचे देखें, या उनके नजरों में तो कभी देखते नहीं थे, पर ऐसा नहीं करके ऐसे देख रहे हैं, लाइक बात करो जो करना है. हमारे जमाने में ऐसा सब नहीं होता था. तो it is normal, especially when your father must be obviously giving you a so called lecture, जो तुम लोग बच्चे सोचते हैं हम पेरेंट्स देते हैं, तो इट्स नॉर्मल. इट्स आधा घंटा तो काफी ज्यादा हो गया है. क्यूडोस टू यू कि आप आधा घंटा भी बैठ चुके, तो इट्स ओके. बहुत इंपॉर्टेंट ये है स्माइल तुम्हारे लिए ये जानना कि तुम्हारे डैड ऐसा क्यों बोल रहे हैं. देखो, आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है कि उनको लगता है कि हमें लेक्चर दिया जा रहा है, ये पेरेंट्स को कुछ हमारे बारे में कुछ पता नहीं, बिना रीजन बोलते रहते हैं. बट नहीं, ऐसा नहीं है. मोस्ट पेरेंट्स, नॉट ऑल, मोस्ट पेरेंट्स कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, ऑफ केयर, of what they have learned. They take that and they want to give it to you, but you don't want to take it, you don't want to learn from their mistakes, you don't want to, you just feel that you know enough, and तुमको क्या पता, लाइक पेरेंट्स को क्या पता, ऐसा तुम लोगों को फीलिंग आती है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपके फादर आपको कुछ बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए बोलते होंगे, अनलेस तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक है, सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स यू हैव, बट इन केस वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, प्लीज उनको रिस्पेक्ट करो. और याद रखो, एक ना एक दिन, गॉड फॉरबिड, वी डू आउट, मोस्टली वी आउटलिव आवर पेरेंट्स. सो वो, आई विश मेरे डैड अब मुझे डांट लगाते. ठीक है, एक जमाना था जब डांट लगाते थे तो आई एम लाइक वेरी अपसेट, राइट. अब तो वो है नहीं, तो वो मिस करते हैं, नॉट दैट डांट मिस करते, बट यू मिस देयर प्रेजेंस. सो जब देखो, अगर से किसी को तुम प्यार करने का हक देते हो ना, तो उनको डांटने का भी हक देना चाहिए. इट कैनॉट बी लाइक ओनली दिस, लाइक इन केस यू इवन इन अ रिलेशनशिप, राइट, फ्रेंडशिप्स हो, रिलेशनशिप्स हो, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक नहीं होता ना, हमेशा परफेक्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ सही जाता है, कुछ गलत जाता है. फिर वो इंसान भी आपको सुना सकता है, वो इंसान भी आपको अपना आपकी गलती समझा सकता है, या बोल सकता है, या आप लोगों में रिफ्ट हो सकता है. इट इज सच अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. So take it in your stride and don't fight it too much. And yeah, half an hour is good if you could focus. Okay, next. अच्छा, sorry, YouTube का अभी मैंने काफी इंस्टा के क्वेश्चंस ले लिया. कहाँ थे? I'm good. हाँ, ये क्या? I still get, हाँ, हूँ भाई, हर जगह हूँ. Alpha man has told twice earlier that you. Okay, hi Rahul. Okay, okay. 10 को हाँ बोल देंगे. Yeah, that was funny. Even I realized when I was saying that. Gently. Okay. Ma'am, how to deal with anxiety? Oh my Jesus Christ. What is this?
ओह वरुण, इतना लंबा मैसेज, एक सेकंड, पहले तो वरुण ने कुछ अच्छा लिखा है तो हम पहले वो पढ़ लेंगे. हाय रचना मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस लाइक ऑलवेज. इट्स माय 24th बर्थडे टुमारो. हैप्पी बर्थडे वरुण, गॉड ब्लेस यू. I hope you do really well. I don't know if it's your real name or not, but happy birthday, Varun. I sought your consultation in August last year. It's for a betrayal from then my partner. I was dealing with classical CPTSD. Okay. Symptoms and nightmares, rage. Yeah. Masters. I did change my life around, cleared the entrance exam, cut off all the toxic people, built myself a new tribe of friends, made my mom and dad proud. And the best thing is I don't even care about my ex anymore. Great job. God bless her. Hope she's eating at some table, just not mine. Thanks for helping me out the darkest time of my life. You told me that I organize a pity party for myself, and I've kept that with me always. Thanks for making such an impact in my life with your time. I'm forever indebted. Thank you so much, Varun. That was such a sweet testimonial. Thank you so much for your kind words, and I'm very happy, that you're doing well. And बच्चा लोग जो हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी रिजॉल्व नहीं होंगी, हम कभी बेटर फील नहीं करेंगे. हम होंगे, हम ठीक हो जाएंगे. जस्ट थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टाइम, और हो जाओगे तुम. ठीक है. Hi, Vanar Buzz. Good evening, Nitin. Yes, I'm doing well. Thank you. Did I miss any? Hello, Rancho's fan. Yeah, why did you change your this thing? How to channelize sexual tension? Okay, chat disconnected. Chat disconnect you. Okay, how to channelize sexual tension? Okay, not that I'm a sex therapist, but have you Googled this? I'm sure there is enough ways. Go exercise, and obviously don't treat people like objects, and masturbate if you need to. And I'm following some doctors, follow them, and he talks about fertility scribbles, unka naam hai. He was talking about it today. Go watch that reel. I think it will help you. And generally, अगर से आप busy हो, पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, we should be able to. And yes, don't get into porn. मैं पूरा 2 बार तो लोगों को बुलाया है मैंने इस टॉपिक पे बात करने के लिए. Please stay away from it. You have no clue how many messages I get who are so into it and their life is shit right now. So please be careful. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर से आप लोग ये सब चीजों में फंसे. ओए भगवान, मैंने इतना चैट मिस कर दिया. Okay, this was not a okay. I think it was not a very bright idea going Insta live and YouTube at the same time, because इतने questions यहाँ हैं और यहाँ भी बचे हैं. तो कितने मैं तो अभी आई ना, तो डोंट वरी, मैं आराम से करूंगी. जिनके पास पेशेंस है सुनो, जिनके पास पेशेंस नहीं बाद में देख लेना. ठीक है. बिकॉज आई जस्ट रियलाइज इतना सब कुछ यहाँ पे भी है. ओके, क्या है, किधर है? हाय, एक मिनट यार. मैं तो पूरा नीचे ही मैम लाइव ऑन के. हाँ 10 को बोल. अच्छा यहाँ पे आ गए. ओके, सॉरी. ओके. Okay, Sushobat, I'm back. I don't know where did you go, but okay. सब ड्रीम्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अरे सब नहीं कर रहे, वो एक इंसान कर रहा है. साइकोएनालिसिस हो रहा है क्या इधर? नॉट रियली. साइकोएनालिसिस के लिए ड्रीम एनालिसिस के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, तो उनके साथ आपको बात करनी होगी. बट अभी एक आध ड्रीम्स पे इतना कुछ ज्यादा मत एफर्ट डालो. ठीक है. आपको तो पूरे दिन देखते रहे और सुनते रहे. थैंक यू स्टडी सिंह. सोशियोपैथ, हेलो अगेन. बेगेटा मेसी, can you please tell some red flags to know when you're dating? Okay. I'm guessing you have not told me are you a girl or a guy, but chalo, let's not get into gender. Okay, because either which ways अगर से दोनों लड़का हो या लड़की ये सब करें तो ये तो red flags होते हैं. First and foremost, if somebody is abusive sexually, physically, mentally, आपको किसी भी तरह से वो बेजार कर रहे हैं, अगर से वो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं लाइक अ सीसीटीवी, और दे टेल यू क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, आपको अपने फ्रेंड से ब्रेक करने लगाते हैं, these are all red flags. And of course अगर से they are not honest and upfront with you, this is one. See, trust नहीं है तो फिर relationship तो डगमगाएगा. And these are, and अगर से
मैं आज एक आया था मैसेज, तो उससे रिलेटेड मैं बोलूं, अगर से somebody has just come out of a relationship and you jump into this relationship with this person who's just come out, most probably this person is not over that person. So be careful getting into such relationships. Those are red flags when somebody is still living there but with you. You know, they're finding they cannot cope with their pain. So at this moment you could be their rebound. So that is a huge red flag for that person. And if that person hides important information about them, I feel withholding information is as good as lying. झूठ तो एक इंसान बोलता है, पर वो इंसान आपको सच भी नहीं बोल रहा है, वो एक बात है. पर मैं, हाँ, इस बात से मुझे याद आया, क्योंकि वो जो क्वेश्चन रिलेटेड इस पे है, तो if you don't mind, I'll read this message to you all. Not message, sorry, I'm reading the DM because I really feel that ये one of the red flags comes with this. मैंने flag किया था, ये message कहाँ गया? हाँ. So without reading the name of the person, so I'm going to go very slow. Hello, ma'am. I am, let's say, Nibha. Okay, Nibha Nibhi wala हम लोग ये करेंगे, ठीक है? Because I don't want to take the name of the person. I have a question. So I've been in this relationship with this girl for 7 months. Recently, she opened to me about her ex. She shared everything about how abusive and possessive he was. Red flag, abusive, possessiveness. Possessiveness इतने में ठीक है. It's like स्वाद अनुसार ठीक है. अगर से बहुत ज़्यादा हो गया, it is not good. Okay, next. Then she told me that she had slept with him once when we were in a relationship for a month. I was deeply hurt. I asked her why did she do that, and he told that she told that it was all forcibly. ये सब जबरदस्ती हुआ. इसके बाद 5 महीने से नहीं हुआ. I forgive her and tried to move on from that point. I don't know something. She still talks about her ex like वो ये he was good at this, वो ऐसा करता था, वो वैसा करता था. Most of the time her point of view is about him is negative. I patiently listen to her every time, but every time I feel uncomfortable. I don't know what to do at this point. अब मुझे बता सकते हो, since she is my first girlfriend, I have strong feelings for her. Please आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए. अगर श्वेता भाई से भी कुछ बात हो सके तो प्लीज पूछिए. Looking forward to hearing from you. First point, श्वेता के लिए अगर से कोई मैसेज है, please do not go via me. I'm not his secretary. Neither is he mine. We only collaborated for the podcast. We do not talk to each other otherwise. Once in a while, आप कैसे हो, मूव हुआ नहीं हुआ, ये वाली बात होती है. मैं ना तुम्हारे मैसेजेस उनको दूंगी, ना किसी भी यूट्यूब वाले जो भी मेरे पॉडकास्ट के लेते हैं, ना उनका मुझसे नंबर मांगना, ना मुझे बोलना उनको मैसेज भेजने के लिए. अनलेस एक बार ऐसा हुआ था कि क्षितिज का कुछ उन्होंने पेमेंट कर दी थी किसी बंदे ने, और उसने बोला करके मैम, क्योंकि I did a podcast with Kshitij and his team hadn't follow up. That was different. That was business related. So I just told Kshitij's team. That is very different कि business related कुछ हुआ था, and he was saying कि मैम मेरा पैसा अटक गया. So that was different. I tried to help, and Kshitij was very kind. Immediately he looked into it. But other than that, please do not treat me like I am some बीच का middle person कि तुम लोग इधर से मैसेज देने बोलोगे, इसका नंबर उसका मांगेंगे, उनके साथ पॉडकास्ट करना है तो मुझे बोलेंगे मेरे को मेरा रिक्वेस्ट उनको भेजो. नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू अप्रोच दोस पीपल ऑन योर ओन टाइम. पहले तो किसी का नंबर मांगना गलत है. दूसरा, जो भी आपको नंबर देता है, किसी ने आपको ट्रस्ट किया है, किसी का भी नंबर कभी भी नहीं देते. अभी रिसेंटली मैंने किसी को बोला था कि मुझे किसी के साथ पॉडकास्ट करना है, तो मैंने बोला डू यू नो दैट पर्सन, क्योंकि मैं उस इंसान इज लाइक अ someone I know. So I have the personal email. I said no, you cannot share that with me. मैंने खुद बोला कि नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि किसी ने आपको अगर से ट्रस्ट करके उनका नंबर दिया है या ईमेल दिया है जो पर्सनल है, then it is not right to share. It is not even right for me to ask anyone that. Okay, so remember that. अब रही बात, let's now. Then I asked him, how old are you? How old is she? Why did her relationship end? And which year did the relationship end? So both are around 27, 28, and her relationship, his relationship started in 2022 Jan, and they liked each other.
they met, sorry, they liked each other and started, and her relationship, I think, what did he say? It happened. The episode where she still had sex with that guy was 1 month into the relationship, right? Now, there are some things that I need to talk to you all about. मैं अभी आपको बोल रही थी कि जब तक वो इंसान पूरी तरह से सामने वाले पिछले रिलेशनशिप से ना निकले, आप लोग प्लीज रिलेशनशिप में मत जाया करो, क्योंकि वो इंसान अभी तक इज हीलिंग, दैट पर्सन herself is she doesn't know or he doesn't know that they are in pain, so they look for different ways to elevate that pain. Yes, you could be one of the ways that they don't intend to use you, but you will get used most probably. Why? Because वो पूरी तरह से उस रिलेशनशिप से निकले नहीं. 1 2, अगर से कोई ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से निकला है जिसमें अब्यूजिव और उनको मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया, वो इंसान और भी बर्डन लेकर आता है into the new relationship. So even for those people who are jumping from one relationship to the other, I want you all to understand, do not do that. First, heal yourself. Don't be in a rush to get into another. I know it must be feeling good कि यार कोई तो है बात करने के लिए, कोई तो है हमारा सुनने के लिए. You like the attention, you want the validation, the approval, and the love and the care. But saying है ना, you will bleed on the person who has not cut you. So this is what is happening to this person. She was bleeding on him because she has not completely healed. Now this is his first love, right? तो सबसे हमारा जिन का प्यार हुआ है, तुम लोग को मालूम है, हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप इज द मोस्ट क्या बोलते हैं, इमोशनली ड्रिवन रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट क्वाइट ऑफ द टाइम. कि ऐसा होता है, सॉरी इंग्लिश मेरी गलत निकली उस टाइम, मैं खुद ही करेक्ट कर रही हूँ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हमारा पहला प्यार होता है, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा पॉजेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमको सब कुछ लाइक वो हमारे भगवान टाइप्स हो जाते हैं. प्लीज बी केयरफुल, ऐसा प्यार नहीं करते. प्यार करो बट लिमिट में करो. क्यों? क्योंकि फिर तुम बहते चले जाओगे, फिर वो जो बह जाओगे उसमें ड्राउन हो जाओगे. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. नाउ दिस पर्सन सेड दैट ही इज फीलिंग वेरी, नाउ इनिशियली आई थॉट दैट शी हैड सेक्सुअल, ये भी एक पॉइंट है. Many of you all write to me कि I am in a relationship, but I found out that this girl or this guy was in a sexual relationship before this. Please understand, when you are born or when that person is born, there was no certificate. उनके birth certificate पे ये लिखा नहीं था कि this person belongs to you. So till then, let them lead their life. They will decide who they want to have sex with or not. Once they come into the relationship, again, it's the person's choice. Don't force them into it. But you do not need to investigate कि तुमने ऐसा क्यों किया. ये तुम्हारा हक नहीं बनता. वो इंसान की लाइफ है, वो डिसाइड करेगा कि उनको तब क्या सही लगा, उन्होंने किया. So all of you all stop behaving like you own the person. वो तुम्हारा कुत्ता नहीं है या कोई जानवर नहीं है कि तुम उसको कोई बॉन्ड पे लेकर खरीद के आए हो. Please understand, we are all got our freedom of life, of choices we make, good or bad, doesn't matter. Okay, so first and foremost, learn to not investigate so much. तेरा boyfriend था क्या, तेरी girlfriend थी क्या, तुम लोग ने क्या किया, तुम लोग ठीक है थोड़ा बहुत जानने के लिए कि why did you all break up, that's it. But you don't need to go into the in-depth. Did you all have sex, how many times, did you all do this, leave it na. How does it matter to what? The past is gone. The person is now with you. So you need to make sure that you don't get carried away with this kind of questioning. Why? Because it is unhealthy for your brain and unhealthy for your relationship. Because many a times तुम लोग ऐसे सोचोगे यार ये इंसान अगर से क्या ट्रस्टवर्दी, उसके साथ ऐसा किया, शायद मेरे साथ भी ऐसा करी. तो ये सब अननेसेसरी क्वेश्चन आंसर्स जरूरी नहीं है. रही बात रेड फ्लैग की, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि उस लड़की ने कहा कि उस बंदे ने उसको फोर्स किया. हो सकता है इफ शी वाज इन अब्यूजिव रिलेशनशिप, यस हो सकता है कि उसको ऐसा उसने फोर्स किया. बट हैविंग सेड दैट, शी डिड टेल यू द ट्रूथ, राइट? सो दैट इज क्रेडिबल दैट इन स्पाइट ऑफ फियर डूइंग समथिंग लाइक दिस, yet she was honest with you. So appreciate the honesty.
And also because it's your first relationship, please go slow. Give her time to heal from this. And तुम लोग अभी तो काफी ओल्ड हो, ऐसा नहीं कि 15-16 साल के हो, 27-28 के हो, and you're old enough to conduct a relationship with more maturity. Don't feel bad like you owned her and why she did that. Yes, it was, she just met you. I don't know whether you were committed or not, but maybe she was still stuck there. That's why I said, ये rebound, तुम rebound relationship भी हो सकते हो, जरूरी नहीं है, but ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अच्छे इंसान हो and finally she's found the right person. Maybe she was in a bad relationship and she deserves better, and maybe you are the better. So there are lots of ifs and buts and so many there's so much dynamics involved in this, because I've never spoken to her. This is your part of the story, so learn to let it go. जो हो गया उस पे मिट्टी डालो. If she is trustworthy and sit down and talk, do not ever cheat on me. Make sure that you tell me the truth. Transparency is very important, because एक बार एक इंसान के दिमाग में वो चलता है ना, तो वो बहुत तकलीफ देता है. तो sit down, talk, and if you can move on from it. But if you see this girl and you're saying mostly she's talking negatively, you have to understand 3.5 years she was with this person. She must obviously, यार हम एक कुत्ता राह चलता हो, स्ट्रे डॉग ही क्यों ना सही, वो आता है, तुम उसको बिस्किट खिलाते हो, वो चला जाता है, फिर नेक्स्ट दिन तुम जाते हो, फिर से वो आता है, तुमने उसको बिस्किट खिलाया, 4 दिन तुमने ऐसा किया, 5वें दिन वो कुत्ता नहीं आता है, तुम सोचने लगते हो ये कुत्ता क्यों नहीं आया. जब तुम्हारी अटैचमेंट एक कुत्ते से हो सकती है, ठीक है, तुम उसको, ना तुम्हारा पेट है ना तुम्हारा, शायद कभी कभी वो तुम पे भौंकता भी होगा, ठीक है, सो फिर भी हमको ऐसे चीज से हो जाता है. तो imagine what happens when you're in a 3.5 year relationship. There are so many unresolved things in your mind, good and bad, and sometimes when you are not resolved, which looks like she is not, please tell her to maybe seek counseling or overcome it by herself. Otherwise you are going to get hurt in this whole thing. And I hope she does well. Give your relationship a chance. तुम लोग अगर से 15-16 के होते ना, तो मैं बोलती यार वैसे भी खत्म होने वाला है, क्योंकि इतना जल्दी जो स्टार्ट होता है इतना देर तक बहुत कम चलते हैं. तो तुम you're old enough to, for all you know, maybe if you are planning to get married to each other, it's nice to start off fresh and start off with, and tell her that whenever you talk about your ex, it irritates the shit out of me. Stop doing it. Okay. Then she should learn to talk about him to her friends if she's irritated and that negativity has to come out. Then she can do it with her friends, right? बथेरे लोग हैं, आपके साथ ही क्यों डिस्कस करना जरूरी है. तो ये काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ चीजें रिलेशनशिप में हमको लगता है आई एम बीइंग सो ऑनेस्ट, आई एम बीइंग सो अपफ्रंट, आई एम टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट माय एक्स बॉयफ्रेंड, बट जरूरी नहीं करके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को वो अच्छा लगे. ठीक है. सो इफ एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, डू टेक्स्ट मी. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. ठीक है. Oof. Okay, give me 2 seconds. I need to drink water. This was not very, I'm not very sure I did the right thing by having 2 sessions back to back. Okay. My parents are too authoritative and I have no freedom. कोई बात नहीं, it is all temporary. आप जब काम करने लग जाओगी, बड़े हो जाओगे, शादी कर लोगे, अपने आप वो सब freedom आ जाएगा. अभी के लिए please झेलो it, because I'm guessing you are still studying and you still need them around. If they are really not like great parents, you have a choice later, and study and education is your ticket to freedom. Make sure that you study well. लड़की पटाने का सही समय क्या है? Can you imagine? मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा एक तो पटाना क्या होता है यार, कि क्या लैंग्वेज है. थोड़ा talk with respect about girls. Okay. And देखो, कोई एज नहीं होता इस चीज. हर इंसान अपने आप डिसाइड करता है उनको कब रिलेशनशिप में जाना है, कब नहीं जाना है. किसी को पता होता है कि सामने खड्डा है, फिर भी वो देखकर फिर भी छलांग मारते हैं, ये सोच के कि पैराशूट खुलने वाला है, क्या होएगा वर्स्ट केस सिनेरियो. सो वेल, this is the thing, you decide. There is no particular age, but yes,
आजकल बच्चे लोग बहुत जल्दी, तुम लोग रिलेशनशिप्स में जा रहे हो, फिर तुम्हारे पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो. Please be carful. And there's one more query from Insta. I need to read that to you all. But मैं पहले देख लूँ उधर और कुछ chats है क्या? सना अली same problem क्या? Okay. हाँ. कार्नो साहा, मैम मैं बहुत अनसोशल हूँ, गया हूँ, क्या करूँ? अगर से हो गए, एक तो अच्छी बात है कि आपको पता है कि आप अनसोशल हो गए, पर हुए क्यों? 1, 2, उसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच कर नोट डाउन करो कि व्हाट एट द टॉप ऑफ द हेड आई कैन जस्ट टेल यू, ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड, ज्वाइन वेरियस ग्रुप्स, चेस खेलो अगर से अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलो, म्यूजिक क्लास ज्वाइन करो, इतनी सारी चीजें हैं. अगर से हमारे जमाने में ये सब नहीं था, आजकल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से अपॉर्चुनिटी मिलती है. और आज किसी ने लिखा कि मैम ऑन द बीम फिर से स्टार्ट करो, जहाँ पे हम बैठ के एक दूसरे से बात करते थे. तुम लोगों के लिए मैंने कपल ऑफ टाइम्स वो किया, और फिर बहुत लोग नहीं शो अप करते थे, सिर्फ 2-3 आते थे. यार मैं फिर से नहीं स्टार्ट करूंगी इफ यू पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट. If you really want to work on your communication and learn to talk to each other, Discord पे तुम कर लेते हो, पर यहाँ पे फेस टू फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सारा टाइम कैमरास को ऑफ करके नहीं जीते, हमको रियल लाइफ में एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ती है, हमको बात करना होता है. तो प्लीज, अगर से तुमको ऑन द बीम सेशन चाहिए फिर से, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू अटेंडेड. ठीक है, एक सेकेंड. अब एंड ऑफ कोर्स एंटी सोशल होने का ये क्या रीजन था? तुम फिर से ऐसे क्यों हो गया? क्या तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें बिट्रे किया या व्हाटएवर? नए दोस्त बनाओ यार. कोई भी हम एक ही इंसान हमारे साथ जिंदगी भर रहता है, वो है हम. मेक योरसेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड एंड डोंट बी सो दिस थिंग कि अगर से दिल टूटा या गर्लफ्रेंड का इशू हो गया एंड ऑल दैट. लर्न एंड ऑफ कोर्स ज्वाइन पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस. एंड पब्लिक स्पीकिंग डजंट मीन दैट you talk on stage or something. It means you learn to talk. हम सब ह्यूमन बींग्स ही हैं. पता नहीं तुम लोग इतने क्यों घबराते हो इंसान से बात करने के लिए. तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं. ठीक है मैम. एवरी टाइम आई सी अ गर्ल आई स्टार्ट सीइंग her sexually. Is it normal? If not, how can I stop it? It makes me feel bad. I mean, yeah, you're 18, so it must be your hormones and all of it. Yeah, but please, sexual तब होते हैं जब कंसेंट होता है. आपको भी नहीं अच्छा लगता आते जाते आपको लोग ऐसे देखें कि you're some male prostitute, right? That's not something you wish for. So remember कि consent is important. Second, a human being is more than just for sexual objectification. We are girls who have a brain, a heart, and just like you, we are human beings, and we don't like to be ledged, and we don't like to be thought about कि हम बिना कपड़े कैसे लगते हैं and all that. That's very cheap. Okay, so अपना harness your energy in the right way, respect people. And yes, it's very normal to want to be in relationships. It's very normal to be wanting to be with a girl at this age, but it doesn't mean that you need to behave like an animal and like a dog on heat. You are a human being. You got a brain, and make sure that you use that brain well. ठीक है? क्या है? ओम ब्रो, आपकी एज क्या है? क्या फर्क पड़ता है किसकी एज क्या है इधर? अच्छा, इंस्टा, सॉरी. एक मिनट. Okay, I did. How to handle yourself at work when you get attached to your team, workplace, and they disappoint. See, disappointments are normal, नहीं? तुम लोग को क्यों इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं करेगा, कि लाइफ हमेशा हंकी डोरी चलेगी, लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे प्लीज समझाओ. हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट योर टीम विल नॉट डिसअपॉइंट मी? और तुम ऐसे बात करो कि तुम उनको डिसअपॉइंट नहीं करते, कि तुम परफेक्ट, एकदम परफेक्शन की मोहरत हो. ऐसा थोड़ी होता है. उससे सीखो. डिसअपॉइंटमेंट हो जाए तो उनको लेट गो करो, उनको समझो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और आप पहले तो अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करो. व्हाई द हेल डू यू हैव सच अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल? Tone your expectation, increase your acceptance level that they are human beings, they will make mistakes, and nobody, तुम्हारे puppets थोड़ी है कि they will do according to you, right? So they will do what they feel like in a particular situation. सबका ब्रेन अलग सोचता है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, कल्चरल बोलो, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बोलो, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलो, सब इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते. तो गलती जब हम करते हैं, इंसानी तो करते हैं,
और many reasons behind हम क्या कर रहे हैं, और जरूरी नहीं क्योंकि आपके हिसाब से they disappoint you, but in their mind they are like हमने तो कुछ नहीं किया. क्योंकि हम जब किसी चीज को देखते हैं ना, हम our perspective is so different from other people's perspective. We only see what affects us, why it bothers us. We never see it from their point of view. कि most probably they think they have not done anything to disappoint you. It's your expectations which are unrealistic. So tone that down. ठीक है? आपके बैक में घोष देख रहा है क्या? कौन दिख रहा है? कुछ भी यार. मैम हाउ डू वी, मैंने वो रिप्लाई कर दिया वहां पे. हाफ एन आवर कौन बतियाता है? अरे मैं, प्लीज. अच्छा हाँ, अच्छा वो उनको, अच्छा उनको बोल रहे हो, उनके फादर को. सॉरी. हेलो हाय शिवम. ओके, आपसे पूछने के लिए काफी कुछ याद कर रहा था. जब लाइव ऊपर होते हो आपको देख सब भूल जाता हूँ. ओके मोहित, नेक्स्ट टाइम नोट और पैड लेके लिख लो या फोन पे लिखो, ठीक है? ओके. ओके राइट. मैं 2 ईयर से सिंगल हूँ और जब से सिंगल हुआ हूँ तब से बहुत खुश हूँ. हाँ, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल, बिकॉज अगर से एक रिलेशनशिप में इतने दुखी हो और सारा टाइम स्ट्रेस चल रहा हो और तुम्हारा दिमाग का भरता हो रहा है एवरी डे बाय ऑल दिस नॉनसेंस, तो फिर बेटर टू बी सिंगल. एक मिनट. इज इट बैड to have decided to work for money and nothing else, especially when your job requires helping people? Okay. Is it bad to have decided to work for money and nothing else? Well, what do you think doctors do? Doctors are helping people every single day. Teachers, what do? They are helping children every single day and they're making money out of it. So why is it wrong? There's nothing wrong with it. Unless you are unless you're very greedy, unless you're hurting people and you're not making your life useful other than that. So otherwise each one to their own. जिनको जितना पैसा बनाना है. Yes, किसी के कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत बीमार होता है, उनके पास पैसे नहीं होते और फिर तुम उनको ट्रीट नहीं करते और बोलते चलो हटो ऐसे निकलो, तो वो गलत है. इफ यू हैव एंड यू कैन हेल्प समवन एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस, व्हाई नॉट? बट अर्निंग मनी इज फाइन. अच्छा पता नहीं तुम लोग बीच में क्या. हाय मैम. हाय एपिक मनोज, आई एम डूइंग वेल. इंस्टाग्राम पे देखो जरा, 2 बार कॉफी बनाकर पीछे. ओके. ओए, क्या देखना है मुझे इंस्टाग्राम पे? मुझे पहले वो सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर करना. कहाँ गया वो वाला? ओ हाँ, ये वाला. हाँ, सो ये इनका भी नाम नहीं लूंगी, बट yesterday, yeah, this was day before yesterday. So this person was wanted to end his life. Why? Because I'll tell you why. So he was in a relationship for 10 years. 10. Okay. Her family showed her one boy for marriage. They met in July and they met. But before 17, she was in love with this guy and was talking to him and sharing everything. After 17, she was talking to me. Today she's saying, I'm feeling out of love. She's from another state. She said, my family members will kill you. And she belongs to Haryana and belong to Maharashtra. So this is for that person. I have sent you the resources, but I would like to tell you all, जो लोग, it's यार अगर से आप किसी को इतना 10 साल is not a short amount of time. Okay. Yes, it is okay to fall out of love. It is okay if your relationship, you grow out of it. But कोई आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़ के जाए तो तकलीफ तो होगी. पर अगर से कोई आपके साथ ये टाइम पे नहीं खड़ा रहता है या खड़े रहती है, in this case the girl has left, and you need to understand that let that person go. It's better that they leave you now than leave you later after you get married, because marriage is a lot of hard work. It's a lot of compromises. It goes a long way. It's a beautiful institution if you manage to keep it going right. And if this person 10 साल के बाद आपके साथ उसने ऐसा किया है, तो मेरे हिसाब से अच्छा हो गया वो चली गई, क्योंकि वो उसको तो आपकी वैल्यू है ही नहीं. जो इंसान आपको ऐसे कर सकता है, प्लीज उसके लिए अपनी जान मत गंवाना.
आपके पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना, अपने लाइफ के बारे में भी सोचना. आई नो दैट एट दिस मोमेंट यू आर हर्टिंग एंड इट मस्ट बी हर्टिंग अ लॉट. हम जब भी ब्रेकअप्स होता है इट इज लाइक अ फिजिकल पेन, लाइक अ ट्रॉमा, बट आप इससे निकल सकते हो. जस्ट गिव इट सम टाइम. यू जस्ट इमोशनली वेरी वेरी vulnerable and fragile at the moment. Like I have given you certain supplements. If you're really under a lot of anxiety, please speak to a doctor. Please go to a psychiatrist and take some medication for now. But don't get hooked to it. मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी फिलहाल काउंसलिंग नहीं कर सकती बिकॉज मेरा बिजी है स्केड्यूल. बट इफ आई कैन वी कैन ट्राई टॉकिंग नेक्स्ट वीक. बट प्लीज डोंट. आई कैन नॉट टेक केसेस विद सुसाइडल टेंडेंसीज क्योंकि आपको मैंने जब इनटेक फॉर्म बोला था तब आपने लिखा नॉट सुसाइडल, बट देन yesterday night you wrote to me that you're suicidal. So I cannot take such cases, no, because it's not that I don't want to help you. It's because I'm not trained to handle that, and it's a liability for someone like me. So please don't harm yourself. Speak to your family. Just give it time. First दिन हमको बहुत तकलीफ होगी, 2 दिन 4 दिन 1 महीना, बस वक्त. Only time can heal. And of course I have given you a lot of resources. We need the certain resources also to heal from it, and you will. ऐसा अभी लगता है करके इससे आगे नहीं बढ़ोगे. बट ट्रस्ट में जितने लोगों ने इंस्टा पे हो या अभी यूट्यूब पे, there are many people who have gone through heartaches and heartbreaks, and people even who get divorced, they manage to move on. You will also be able to move on only if you put your mind and heart to healing from this. And don't beg her to come back if she has just left you like this. I don't think she deserves a place in your life. I mean, after 10 years, somebody has just one fine day decided कि एक लड़का दिखा दे. एक तो वो लड़का देखने गई, देख रही है, that means तभी से आपको hint आ जाना चाहिए था कि this girl is not going to stand by you, because why did she even agree to? And मैं सबको यही कहती हूँ, अगर से आपको मालूम है करके आपके फैमिली मेंबर्स अचानक उसको 10 साल के बाद ये रियलाइज हो कि मेरे फैमिली मेंबर्स आपको हार्म करेंगे, पहले तो आप सबको मैं बोलूँ, आई नो दैट लव इज अ मैटर ऑफ द हार्ट एंड ऑल दैट, बट फॉर गॉड सेक इफ यू कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि आप लोगों की फैमिली आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, रिलीजन प्रॉब्लम्स है, कास्ट प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, please do not get into relationships with people who trust you. Okay, when you get into a relationship, you give a promise, you bloody well fucking keep it. Don't hurt the person last minute and then all of a sudden, oh mere parents nahi maan rahe. And how many boys do this to girls, you know, last minute change karte hain mind. मैं ये नहीं कहती गर्ल्स नहीं करते, यहाँ पे गर्ल का है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी लड़कियां मुझे लिखते हैं कि अचानक वो बोलते हैं, स्पेशली बॉयज के पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं. यार तुम छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हो, जब तुमने रिलेशनशिप किया था तब क्यों नहीं सोचा? सो प्लीज बिफोर यू एंटर दिस रिलेशनशिप, एंटर सच रिलेशनशिप्स, सी योर फैमिली बैकग्राउंड, वेदर योर पेरेंट्स आर गोइंग टू स्टैंड बाय यू और डू यू हैव द गट्स टू गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स. आई एम नॉट सेइंग गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. yes, parents have raised you, parents have brought you up today. आप जो भी हो आपके पेरेंट्स की वजह से हो. अगर से ऐसा है तो then don't even go into relationships ना, if your parents are your priority. But having said that, जैसे मेरी लव मैरिज हुई थी, my husband was very adamant that he will marry me and there is no other way. He didn't see any other girl. He said मैं नहीं देखूंगा कोई भी और लड़की, मुझे इसी से शादी करनी. बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत टाइम के लिए वेट किया, फिर हमारी शादी हो गई. तो ऐसा भी हो सकता है, माँ बाप को मनाओ और माँ बाप को समझाओ why this person is right for you. I feel कि अगर से somebody truly loves you, you know, it's not about money, it's about somebody who actually cares about you. And if you know कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, then don't go get into relationships. And if you have caste religion issues, even more reason, please don't get into it, because खुद को भी हर्ट करोगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे, दोनों साइड के पेरेंट्स को भी हर्ट करोगे. तो बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हो. ऐसे यू नो डोंट जस्ट गो विद द फ्लो, अरे चलो देख लेते हैं क्या होता है. पर वो देखने देखने में देखो ऐसा होता है, किसी का दिल टूटता है और फिर कोई तुम्हारे वजह से वुड बी हार्मिंग देमसेल्व्स. सो बी केयरफुल. ओके, मैं यूट्यूब देखूं कि सब जगह इतने मैसेजेस. एक मिनट में थोड़ा कुछ जूस पी लेती हूँ. बाय द वे, हाउ टू. Okay, I have recently become a lot of self-destructive. तुम लोग को मालूम है ना मुझे हिंदी आती है, तो हिंदी में लिखा करो.
I have recently become a lot of self-destructive right now due to my family troubling me. How can I change it? Okay. मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये तीन सेंटेंस में नहीं, एक सेंटेंस है पूरा, क्योंकि फुल स्टॉप वगैरह नहीं है. तो आपने ये नहीं बताया है कि आपकी फैमिली आपको क्यों ट्रबल कर रही है, और आपके हिसाब से व्हाट डज ट्रबल एक्चुअली मीन. ओके, आर दे फिजिकली हिटिंग यू, आर दे मेंटली टॉर्चरिंग यू कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. क्या शादी की वजह से आपको फैमिली ट्रबल कर रही है? आपने कुछ नहीं लिखा है. यूएस से जो भी, जिसने भी, whoever has written this to me, could you at least DM me the context? Please understand, without the context I'm just talking like कुछ भी अपने मन में सोचते, शायद ये होता होगा, शायद वो होता होगा, शायद ये होता. प्लीज थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बताओ. एंड इफ यू आर डूइंग सेल्फ हार्म, then you are coping with your stress in a not so good way. Whether you cut yourself, whether you do drugs, you take cigarette, you smoke cigarettes, or you drink and all that, that's not going to help. It will just put you into a loop of destructiveness, and you need to not do that. If that would solve the problem, won't all counselors and psychiatrists tell you to harm yourself because it's going to it's going to change your parents, and it's going to change your parents mindset, or it's going to change your circumstances? It's not going to do that. प्लीज मेरा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वाला देखो, अपनी एंजाइटी को प्रॉपरली हैंडल करना सीखो. बट हैविंग सेड दैट, आई नीड टू नो इन व्हाट वे, मे बी if you tell me, I can help you in a much more structured way than just answering you on YouTube. So please do write to me. Please don't hurt yourself. उससे ठीक नहीं होगा. इसको बोलते हैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करना. इतनी सी प्रॉब्लम थी, तुमने अपने को सेल्फ हार्म करके इतना बड़ा कर दिया है प्रॉब्लम, और तुमने अभी अपने ब्रेन को ये सिखाया है कि दिस इज हाउ आई डील विद स्ट्रेस, दैट आई डोंट नो व्हाट द फक टू डू, सो लेट मी गो हार्म माई सेल्फ. Is it going to help? No, it is just going to leave you bleeding, or you could be, if you do drugs and smoking, it's bad for your health. How is it going to help you? So please contact me. Let me see how else I can help you. Okay, and please join our Discord. It's a virtual support group. Talk to people, find out. There must be other people also who are, बहुत सारे, एक तो पूरा ग्रुप ही है, उसमें लिखा हुआ है people going through parent wale issues like toxic parenting and all that stuff. So please do connect with our Discord members. Even if you feel like anonymously, you don't want to give your name, like here also you have not given the name, please do contact them. Contact there and sit and chat with people. Get it out of your system. Okay, I need to take a break. और बाकी क्या चल रहा है people? यहाँ कुछ लोग देख रहे हैं. How strange, it's equal number of viewers in both places. By the way, what I'm drinking is not tasty at all. Okay. Okay, I saw the smile. I saw that. I fear that people. ये हो रहा है. I fear that people will go ahead of me and they will dominate me and control me. देखो ये when I was young, people used to make fun of my marks, so that left me like this. Ma'am, how to deal with jealousy? Ma'am, I also want to say at the top, I don't like when others go ahead of me. Okay. 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 So this has to do with low self-worth. Okay. जब हमको खुद की वैल्यू नहीं होती, हम अपनी वैल्यू मार्क्स से, जॉब से, बाकी सब चीजों से, जब आपको लगता है करके, एंड पूरी तरह से तुम्हारी भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने ये आप लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि जस्ट बिकॉज आपसे ज्यादा किसी के मार्क्स है तो वो आपसे बेटर हो गए, किसी को पहले जॉब मिल गई तो वो आपसे बेटर है, कोई आपसे ज्यादा टॉलर है तो वो आपसे बेटर है. ये सब शिट आपको सोसाइटी ने दिमाग में डाल लिया, पर गलती आपकी है कि आपने इसको ऑब्जर्व करके यू हैव मेड इट लाइक योर लाइफ मोटो कि आई हैव टू बी इन फ्रंट. ये कोई ब्लडी रेस नहीं चल रही. कितने बार, पता नहीं कितने यूट्यूबर्स, कितने कोट्स ने ये कहा है कि यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन, यू आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीबॉडी. व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑब्वियसली हम सबके ट्रेड्स अलग है, हम सब यूनिक इन आवर ओन वे, वी हैव आवर ओन जर्नी. किसी को
माउंटेन चढ़ना है, किसी को नहीं चढ़ना है, किसी को डिफरेंट माउंटेन चढ़ना है, किसी को बैठना है, कोई मीडियम जाएगा, कोई स्लो जाएगा, सब अपने तरह से कैसे जाएगा. अभी लेट मी पुट माई सेल्फ इन टू परस्पेक्टिव. आई एम श्योर पीपल विल हैव मोर मनी देन मी, मोर credentials than me, more certifications than me. They will be better looking than me. There'll be so many criterias according to society. Not that I'm saying, but everybody, when they put it, but how can it be possible when I'm so unique? That person is unique in their own way. I'm unique in my own way. हमेशा हमारे ऊपर कोई होगा, उनके ऊपर कोई होगा. कितनी देर देख देख के अपने आप को तंग करोगे? Why are you not comfortable with who you are, comfortable with what you do? The day you learn this, and क्योंकि तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, तुम लोग को ये अभी इतना जल्दी शायद नहीं आएगा. आप मेरी सेल्फ वर्थ रिसोर्स देख सकते हो, और if you can learn nothing like it, the two resources that I have made, I think I'm very proud of myself for making that, because I have addressed something which most of us should have learned when we are growing up, but unfortunately हमको कोई ये सिखाता नहीं है. आप अगर से ओवरथिंकिंग के बेसिक फंडामेंटल सीख जाओ और सेल्फ वर्थ रिसोर्स से वाकिफ होकर उसको प्रैक्टिस में, सिर्फ देखकर कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना है आपको. इफ यू प्रैक्टिस दिस, you will get out of this rubbish thing, because every single time somebody will be ahead of you in some way or form. कब तक ऐसा करोगे? It is a very sad way to live life. It is, you have been given one life. You can see, if you can walk, if you have food to eat, if you have shelter, you're so blessed already. You're richer than millions of other people in this world. पर तुमको वो नहीं दिखता, तुमको वही दिखता है जो तुम्हारे पास नहीं है, और उसको तुमको खुद बैठ के चेंज करना है. कि दूसरों से अपने आप का, तुम्हारा मेजरिंग स्केल वो लोग नहीं है, तुम्हारा पास्ट परफॉर्मेंस vis-a-vis टुडेज परफॉर्मेंस, तुमको वो देखना है. और तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या तुमको ये लेगेसी छोड़ के जानी है कि तुम कितने अंदर से सेल्फ डाउट से भरे थे. दिस इज सेल्फ डाउट. When you keep comparing to others, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे से बेटर काउंसलर्स हो, मुझसे बेटर लुकिंग हो, मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ being me. Like, just like I accept my voice, my hair, my everything, I have accepted that I will not be the most famous YouTuber or the most liked person or the best counselor on this planet. No, but I know I am Rachna Daryani and I have a unique quality, and I love that about me. that वो एक एलिमेंट होते हैं हम सब में. आज अभी अगर से आप लोग आंख बंद करके वो ढूंढोगे ना, आपको ऐसा पता चलेगा. That one thing which separates us from the rest of the world. You can't have what I have, I can't have what you have. We all have that uniqueness which nobody can, even your twin cannot replicate that. Remember that. You will have that charm, that charisma, that something special about you. Look for that, and that the day you find it, hold on to it, because nobody can replace you. Remember that. तुम कितना भी कोशिश ना, तुम वो जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको भी तुम भी नहीं रिप्लेस कर सकते. क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह यूनिक है, तुम अपनी जगह अलग हो. और इसको डाइवर्सिटी को अपनाओ, कंपेयर मत करो. ठीक है? वेस्ट कर रहे हो अपना वक्त. ठीक है? जैसे एक फूल होता है, एक पत्ता होता है, हर फूल में उसके हर पेटल्स भी अलग होते हैं. हम वैसे ही इस स्पीसीज में हमारा हर एक पेटल डिफरेंट होता है. Just love the beauty of being you. Why are you sitting and wasting your time with फालतू की comparisons? Do I believe in law of attraction? Not really. I believe more in action, and every day to get up and have an action plan, to have an intention driven towards that. You can keep saying पैसा चाहिए, फरारी चाहिए, पैसा चाहिए, फरारी चाहिए. अरे पर आएगा कहाँ से अगर से काम ही नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे? थोड़ी ऐसे ही ऑटोमेटिकली आ सकता है. कितने लोगों की एक आध बार लॉटरी रख सकते हैं, हमेशा तो नहीं लग सकती ना. सो दैट इज द थिंग. ओके, इंस्टा, यूट्यूब टाइम. How to approach new people? I recently left my school, joined a dummy. Somebody, can you enlighten me? What is a dummy? I'm not sure. Left my school, joined a dummy and coaching. Okay, I know no one there. यार सबके साथ होता है, हम सबके साथ. अब मैं जा रही हूँ दुबई, अचानक
from a place where I know so many people, I'll go into a place I barely know anybody, right? We all have to start somewhere. If you don't know anyone there, what has happened to the rest of the world? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम कोई और क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते? अगर से आप कोचिंग में भी हो, यार ये सब लोग हमारे लाइफ में जाने के लिए आते हैं. प्लीज इतना मत एक्सपेक्टेशन रखो कि हम सबके साथ गहरी दोस्ती कर सकते हैं. फाइंड डिफरेंट वेज. जिम ज्वाइन करो, बुक क्लब ज्वाइन करो, कितना कुछ है आजकल. आप आजकल की जनरेशन इतनी लकी है, आप इतना सब कुछ कर सकते हो. बट आप लोग हमेशा, you always undermine what is going right in your life. You have money to study, you have parents who are giving you that to join a coaching, and whatever reason you left your school, I don't know. I don't know what it means to join a dummy school. I'm guessing means correspondence, I'm guessing. I've never heard of that one. But either which ways, there are so many children in orphanages who don't have parents, who don't have the opportunity to study. कितने बच्चे आपने सिग्नल पे देखे होंगे जो भीख मांग रहे होते हैं. यार अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करो, और जब तुम लोग पैसा कमाने लग जाओ, प्लीज ट्राई टू चेंज समवन्स लाइफ. मैं ये नहीं कहती कि गरीबों को सिर्फ पैसा देना चाहिए. इफ यू कैन गिव देम अ जॉब, इफ यू कैन गो टू एन ऑर्फनेज, फीड दोज चिल्ड्रन. You don't have to always try to think कि मैं कितना बड़ा कर रहा हूँ. इतना सा मदद करने की कोशिश करो, आपको अपने आप लाइफ का मोटिव और पर्पस समझ में आ जाएगा. ठीक है? ओके. Your connection, and why does it say that? Okay, I don't know why I went. एक मिनट में वाईफाई ऑन करने की कोशिश करी, यूट्यूब नहीं, अभी तो फिर से आ गया. Don't indulge in a comment, then let it go. Then why are you still there? What is wrong with you? Oh, start हो गया फिर से. Okay, chat disconnected. मैम कसम खाओ आज के बाद इंस्टा और यूट्यूब दोनों पे एक साथ लाइव नहीं हो. हाँ आई नो यार, बहुत ज्यादा. अच्छा इंस्टा वाले, मैं यूट्यूब पे जा रही हूँ क्योंकि यहाँ को और कोई क्वेश्चन है क्या? एक मिनट देखने दो, क्योंकि दिस इज गेटिंग अ बिट टू मच. मैम कैन अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बी कॉम्प्लिकेटेड वन शी? नहीं, इट कैन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तुमको बताती हूँ कि जनरली क्या होता है कि आप अगर से चाइल्ड अडॉप्ट करते हो तो वो बच्चे को कभी ना कभी पता चलेगा, अनलेस आप ऐसे तरीके से करते हो कि उसको बच्चे को कभी नहीं पता चलता. ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन कैन फाइंड आउट. गौरव, somebody who is on YouTube, sorry, Insta and YouTube, can you tell me, am I live on YouTube or not? Oh my god, the amount of chats on Insta. Okay, this is too overwhelming. This was a very bad idea on my part. आई एम सो सॉरी पीपल, ये मैं इतना चैट्स नहीं पढ़ सकती. और माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैम स्ट्रीम यार्ड यूज करो. मुझे नहीं आता कपिल यूज करना. स्ट्रीम यार्ड क्या होता है? लव यू टू अक्षित. 10 सेकेंड मैम. यस 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 मैम. ड्रेस क्या? ड्रेस को क्या हो गया मेरे? हरे कृष्णा. लाइक डमी में सिर्फ एग्जाम देने हैं. अच्छा अच्छा, ओके. आई डोंट नो इज माय यूट्यूब ऑन और नॉट. लेट्स सी, वाईफाई ऑन करते हैं. ठीक है, हम लोग वाईफाई ऑन करके देखते हैं. यार कोई भी इंस्टा वाला यूट्यूब पे नहीं है क्या? कैन यू ऑल चेक? Oh, I'm live on YouTube, but my chat is disconnected, I can't see any chat. Let's see whether it goes through. Hi. मैंने खुद को ही हाई बोला है, पर कुछ हो नहीं रहा. No, it's not showing the chat anymore. Okay, I'm going to. अच्छा, I'm live on YouTube, but I cannot read anything by the way. Okay, मतलब एक जब गौरव का last comment आया है, it says chat disconnected, but it shows that it's still live. I don't know.
Balaji, yes, I know stress control for stress eating is hypnosis, which you can use for stress eating. And keep healthy snacks around you. Don't eat, keep gajar, muli, kakadi, खीरा जो तुम लोग बोलते हो, हम लोग महाराष्ट्र में काकड़ी बोलते हैं, and fruits. So stress eating में health consciously खाना है. Stress eating में जरूरी है क्या cookies and biscuits खाओ? ऐसा नहीं होना चाहिए. मैम, I want to marry but my parents don't support, doesn't. Okay, then फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ बाबा, ठीक है? यार मेरा YouTube चैट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? एंड स्ट्रीम करूं और फिर रीस्ट्रीम करते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या होता है. और पर सारा क्वेश्चन चला जाएगा. उप्स, मेरे इतने क्वेश्चंस है यहाँ पे. Gaurav, write this name to me. I don't know who she is. I'll forget by the time. Is it normal to be with any girl? No, why with any girl? Someone you like, na? It's very important. मृणाल, तुमने क्वेश्चन मार्क. मैम, लड़कियों के से बात करने में डर लगता है. अरे काहे डर लगता है यार, वो भी इंसान ही है, इसमें डरने की क्या जरूरत है? सो डरो मत. छोटी छोटी विन्स रिवॉर्ड करो. ओके यार, पता नहीं क्या क्या रिट्रैक्ट किया है, कैसे, हाउ टू बिल्ड अट्रैक्शन, हाउ टू बिल्ड अट्रैक्शन विद गर्ल्स. हेलो, प्लीज फॉलो क्षितिज एंड सरद. यार, यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन. आई एम नॉट अ डेटिंग कोच. आई थिंक यू आर मिस्टेकन. मैं क्या करती हूँ? दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेल द ट्रूथ. ओए, यूट्यूब पे इतने कमेंट्स आए हैं कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक है? ओके, I don't know what to do. Should I end YouTube and go on Insta only, or be here and end Insta? I don't know. I'm torn between you people over here. So, wow, so many people have joined on Insta. ये अच्छा, Insta का एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि पता चलता है लोग ज्वाइन हो रहे हैं. YouTube में पता नहीं चलता, मतलब पता चलता है पर नहीं पता चलता है. और YouTube के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे टक टक टक, ये वेव और ये सब नहीं आते, तो क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है? बट मैम, अच्छा, मैं ये स्ट्रीम एंड कर रही हूँ, ठीक है? मैं रीस्ट्रीम करने वाली हूँ. कोई क्वेश्चंस यूट्यूब पे आएगा तो प्लीज बता देना.